Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, viewers. Welcome once again to my channel. My name is Mohammed Atiq Anwar, and you're watching my channel, Mohammed Atiq Anwar, and Education for Us All. So, a quick plea before we start to please like, share, and subscribe to the channel if you haven't done already. Okay, so as you can see, we are back to the good old recipe of the day series. So, this is the 43rd one that I am doing. So this is at the request of some friends who have requested that the things that I make or this recipes that I have used, if they, if I know or if I want. Sorry, if I can, to put them into this presentation form so that all the things are listed and it's easier to follow step by step, and also they can read all the things rather than going to the description and following it all in one go. Okay. I mean, I do appreciate many people saying that I should do the practical stuff as well, but as those of you that do the practical stuff, you know how much is involved in that. For me, this is a lot easier, and yeah, as long as I don't get copyright claims, I shall try and do this for as many as possible. I will try to return, of course, because I do love making those videos, but it's just so time consuming. नाज़रीन खुश आमदीद, मेरा नाम है मोहम्मद अतीक अनवर और एक बार फिर ये है जी रेसिपी ऑफ द डे जो कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे प्रेजेंटेशन में हो ताकि वो लिस्ट बाय लिस्ट फॉलो कर सकें और जो डिस्क्रिप्शन में होता है वो कुछ मुश्किल होता है और प्रैक्टिकल भी मेरे लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और ये बहुत आसान है क्योंकि मैं कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ जो रेसिपीज मैंने यूज़ की हुई है. Okay, so let's go to today's recipe. Sorry, it says there. Oh god. Yeah, sorry, yeah, I should have said we are making high protein muffins. नाज़रीन वो ये muffins की recipe है, ये मेरे grandchildren बहुत पसंद करते हैं. So the grandchildren love this and they do it themselves as well. Okay, so these are the things that we will need. One ripe banana, एक अदद केला, 50 milliliters of maple syrup. मेपल एक प्लांट होता है और ये सिरप है नाजरीन. हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर ये मुझे इसकी उर्दू नहीं है. Sorry, I should have googled it. I don't know the Urdu for Google. If you know, please do put it in the comments section. 250 ounces of, sorry, 250 grams of Greek style yogurt, which of course doesn't have tanginess. नाजरीन ये Greek yogurt जिसमें खटास नहीं होती. 3 large free range eggs, so 3 अदद अंडे आज़ाद मुर्गी के, मगर अगर आपके पास नहीं है तो कुछ दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 1 vanilla extract और paste vanilla का थोड़ा सा extract. सेल्फ रेजिंग फ्लावर, ये जो खुद ऊपर होता है फ्लावर जिसे कहते हैं. 1 tablespoon of baking powder, cinnamon, दालचीनी पीटी हुई, 1 ground sorry, yes, cinnamon, then ground almonds. I'm on the wrong one. 85 grams of that. Let's start again. 1 tablespoon of ground cinnamon, a tablespoon, oh no, it's teaspoons, I think. I'm sorry, I keep forgetting. Teaspoon of tablespoons would be an awful lot. Teaspoon of baking powder and cinnamon. So नाजरीन ये teaspoon है छोटी baking powder और दालचीनी की. 85 grams of ground almonds, 85 gram पीटे हुए बादाम, a handful of flaked almonds जो कुछ बादाम हमने काटने, और हेज़लनट्स और पीकन्स. अगेन मुझे इनकी उर्दू नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है तो
डिस्क्रिप्शन में लिखें आई थिंक पीकन्स पटवारी मुझे मालूम है नेज़े वो डाल सकते हैं हम तो आलमंड्स ही डालते हैं ओके व्हाट वी ऑन मेथड आई थिंक ओके here we are method नाजरीन ये है जी तरीका okay preheat the oven to 180 sorry 160 to 180 degrees which is gas mark 4 line the 12 hole muffin tin with muffin cases okay नाजरीन हमने oven को पहले ही गर्म करना है अगर आपके पास गैस है तो उसका दर्जा जो है वो 160 से लेकर 180 डिग्री हो अगर आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ नंबर्स होते हैं गैस मार्क 4 तो फिर हमने एक टिन लेना है यहाँ टिन्स मिलते हैं जिनमें 5 हिस्से होते सॉरी 5 नहीं 12 हिस्से होते हैं तो उस उसमें हमने वो पेपर होता है ग्रीस प्रूफ पेपर उसे लाइन करना है जी ऑयल से place a banana in a large bowl and mash with a fork. Add the maple syrup, yogurt, eggs, and vanilla to the bowl and whisk well to combine. Okay जी एक प्याली एक bowl में हमने बनाना कद्दूकश करना है फोक से मैश करना है फिर हम मेपल सिरप दही अंडे वनीला डालेंगे और विस्क करेंगे फेंटेंगे in a separate bowl sieve together the self-raising flour baking powder and cinnamon before adding the ground आलमंड्स ओके जी एक और बोल में हम सिर्फ जो क्या कहते हैं मुझे उर्दू इसकी नहीं आती पढ़ना उर्दू इस पटवारी और ये जो ये फ्लावर सेल्फ रेजिंग फ्लावर बेकिंग पाउडर और दालचीनी उसमें डालकर हिलाना है ताकि गंध जो है उसमें ही रहे और यू नो ऑल द क्लीन फ्लावर and baking powder and cinnamon is in the bowl. Add the dry ingredients into the wet, uh, stirring just until the smooth batter is created. Carefully spoon a mixture into the muffin case, then scatter the nuts on top. ओके जी तो अब हमने सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना है तो स्टर करना है और या ताकि बैटर जो पानी जैसा हो जाए ओके तो I'm trying to think of the word. I think texture is the better word. So don't make it too thick or too thin, otherwise it'll take longer. Okay, नाज़रीन आपने देखना है कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाया या ज़्यादा पानी वाला नहीं अगर पानी वाला है तो और फ्लावर ज़रूरत होगा. Okay, carefully spoon the mixture into the muffin case, then scatter the nuts over the top. तो फिर हमने वो जो mixture बनाया वो केस यानी टिन में डालेंगे टिन में जो पेपर केसिंग्स हैं उसमें डालने हैं तो उसके ऊपर जो जो नट्स हम इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे मैं कहता हूँ हम तो जस्ट आलमंड्स या अखरोट इस्तेमाल करते हैं bake for 15 to 20 minutes or until a skewer when inserted into the middle of the muffin comes out clean and the top is starting to turn golden. Remove from the oven and place on a wire rack to completely cool before consuming. नाज़रीन ये हम 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे और चेक करेंगे वो क्या उसे स्क्यूर कहते हैं लोहे का होता है या वैसे यू नो जैसे टूथपिक है उस जैसे वो डालो तो अगर वो यू नो आप जैसे बेकिंग करते हैं डालें तो साफ उसे निकलना चाहिए ओके दैट मींस इट इज ऑल डन तो फिर हम या ऐसा और सुनहरी रंग का हो तो फिर हम उतारेंगे जी तो वायर
रैक पे रखेंगे तो उसे ठंडा होने देंगे. That's it. Let's show you a picture if I can. There we go. Okay, so as you can see, it has come out really lovely, lovely, lovely golden color there. And you know, the more nuts that you can have, the better it is. But I always use almonds and walnuts. They're my favorites. And we also, you of course, you can use anything, raisins and peanuts, whatever you like. नाज़रीन ये देखो जी ये कितना प्यारा लग रहा है इसका रंग कितना खूबसूरत है गोल्डन गोल्डन रंग है और इस पे काफ़ी किस्म की नट्स हैं जैसा मैंने कहा हम तो बादाम और अखरोट ही अक्सर इस्तेमाल करते हैं मगर आप रेजन्स इस्तेमाल कर सकते हैं और जो आपको आपको चाहिए. Okay, so this really is a nice simple children's recipe really. Okay, so I hope you enjoyed that. So I have prepared the Urdu. नाजरीन ये है जी उर्दू. I wanted to make the presentation less than 10 minutes, but as always, I am always over. So you can read this at your leisure. नाजरीन आप अपने टाइम में ये उर्दू पढ़ सकते हैं. Okay, that's the end of the presentation. I thank you guys. Please keep watching. Please like, share, and subscribe to the channel. Tell all your friends about the channel. Till the next time, look after yourselves. गुड बाय नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया बराए मेहरबानी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा अपना ख्याल रखना दूसरों का ख्याल रखना दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़